डिस्कस करबा मॉक टेस्ट 8 फर्स्ट क्वेश्चन सर्वे when the measured length is less than the actual length then the error is known as ground रे हमें जाई जो distance measure करछंती तो से जो distance measure करछंती that is your measured length जदि हम पाखरे करेक्ट चेन लेंथ थांता देन हमें करेक्ट लेंथ पाई थांते जेहेतु हम पाखरे चेन किछि गोटे रीजन पाई आइदर ग्रेटर देन हे जाइछि नॉर लेस देन हे जाइछि तो सेति पाई हमें जो मेजर्ड लेंथ पाइबा दैट इज योर इनकरेक्ट डिस्टेंस सेति पाई हमें कोन करंती करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ अप्लाई करंती दैट इज योर रॉन्ग इनटू रॉन्ग इक्वल टू राइट इनटू राइट तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हेन द मेजर्ड लेंथ जहां में मेजर करचंती इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ देन कोन कहबा एरर इज नेगेटिव कमी वाला एरर करेक्शन अप्लाई करियो पॉजिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन a distance of 270 meter is to be taped with an error of not more than plus or minus 0.15 meter. Determine how accurately each 30 meter length should be measured to ensure that the error in the above tab distance will not exceed the permissible limit. तो क्वेश्चन ले फर्स्ट डिस्टेंस दे देछि 270 मीटर 270 मीटर आम केमिति मेजर करबा 270 मीटर 30 मीटर आम पाखरे चेन अछि तले हम 9 थरो ताको मापिबा 9 टाइम्स 30 30 30 ए बडी 9 टाइम्स करबा से कहछि एवरी चेन लेंथ रे एरर होछि 0.15 एवरी चेन लेंथ रे एरर होछि 0.15 एंड जो हमें मापिबा 270 मीटर सेटा एक्सीड हबा कथा न 0.15 ता माने टोटल एरर हमको दे देला 0.15 जदि हमें ईच चेन लेंथ रे एरर हमर जणा अछि ताले टोटल एरर हमें केमिति बाहर करबा 9 थर अछि e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर तो ए भली हमें अप टू 9 थर करबा e9 रो स्क्वायर रूट हो ताले 0.15 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रो रूट हो 0.15 is equal to plus or minus 9 root over 3e ताले एटू एरर केते हिजबो प्लस और माइनस 0.05 ऑप्शन बी नेक्स्ट 3 नंबर द लेंथ ऑफ ए लाइन वाज मेजर्ड 20 मीटर चेन स्मॉल एल देला दैट इज 20 मीटर केते फाउंड टू बी 530 मीटर the chain was 0.04 meter too long ताले एल डैश पाई गलो 20.04 मीटर ट्रू लेंथ केते पचारची एबे ही रिसेंटली देखिले करेक्शन अप्लाई कर दवा करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ दैट इज योर राइट इनटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग ताले क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ट्रू लेंथ कैपिटल एल पचारची एल डैश बाय एल इनटू मेजर्ड लेंथ 20.04 divided by 20 into 530 तो आंसर विल बी 530 टू निहाती अधिका हबो कारण 20.04 ऊपर आसलन 531 4 नंबर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सर्वे साउथ 70 डिग्री ईस्ट देछि ताले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आगे ड्रा कर दियो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैग्नेटिक बियरिंग माने मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन रो जो हमें एंगल मेजर करबा टू द सर्वे लाइन ताको हम कहतो मैग्नेटिक बियरिंग तो फास्ट हमें कोन कहले ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ड्रा कर देले ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ मैग्नेटिक बियरिंग देइछे साउथ रू मैग्नेटिक साउथ हमें केतो कोठी जणा नै किंतु क्वेश्चन देइछे डिक्लाइनेशन होची 2 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट त माने मैग्नेटिक नॉर्थ टा 2 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट अछि एटा होची मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ ए एंगल टा हेगला 2 डिग्री एटा 2 डिग्री हेले एटा हो 2 डिग्री ऑपोजिट एंगल कांसेप्ट ताले जो मैग्नेटिक साउथ रू केते अछि 70 डिग्री टुवर्ड्स अछि ईस्ट आडो को 70 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट आडो देन पचाच कोन द ट्रू बियरिंग माने कोन करियो खाली 70 रे 2 ऐड कर दबो साउथ 72 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट
फिफ्थ 5 नंबर कौन स्टेटमेंट 1 कौन कर्वेचर करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन द साइड्स आर लॉन्ग कर्वेचर करेक्शन माने कर्वेचर ऑफ द आर्क को हमें कंसीडर करिवा दैट इज योर कर्वेचर करेक्शन then statement 2 कौन line of collimation is not a level line but it is tangential to level line जेतोले हम इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली लेवल रहइबो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहइबो सेतोले जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड को ही हमें कोन कहबा परफेक्टली लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक कहबा जदी इंक्लाइंड अपवर्ड हला किबा इंक्लाइंड डाउनवर्ड हला ताको हम कहबा लाइन ऑफ साइड जदी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहला ताको ही हम कहबा लाइन ऑफ कॉलिमेशन स्टेटमेंट 2 कहूछ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट ए लेवल लाइन पचारची स्टेटमेंट 1 देला स्टेटमेंट 2 देला जे को स्टेटमेंट ठीक अछि किबा को स्टेटमेंट भूल अछि पचारची तो हम स्टेटमेंट 1 देखिया कर्वेचर करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन साइड्स आर लॉन्ग ठीक अछि सेकंड लाइन देखियो लाइन ऑफ द कॉलिमेशन इज नॉट ए लेवल लाइन बट इट इज टैंजेंशियल लाइन सेकंड लाइन भी ठीक अछि बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू स्टेटमेंट 2 is the correct explanation of statement 1 को स्टेटमेंट एटा ठीक अछि ठीक होबो कि नेक्स्ट होइबा करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन जदि बहुत लॉन्ग रे अछि ए स्टेशन दीटा स्टेशन बहुत लॉन्ग रे अछंती माने ए कांसेप्ट एठी रहला तमरो स्टाफ ये जो तुमरो लाइन ऑफ द कॉलिमेशन एक्चुअली लाइन ऑफ द कॉलिमेशन देले कोन हबो जदि कर्वेचर आसी गला से भी बेंड हे जिवो से कहूछ लाइन ऑफ द कॉलिमेशन इज नॉट ए लेवल लाइन बट इट इज टैंजेंशियल टू द लेवल लाइन को टैंजेंशियल तो ऑप्शन हे जिवो 1 6 नंबर कहूछ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड को मेथड ओरिएंटेशन ता दरकार नाही रेडिएशन माने होची जोठी हमरो सबु स्टेशन देखा जाउथो सबु स्टेशन एक्सेसिबल थिबो सेठी हम यूज करबा रेडिएशन इंटरसेक्शन होची जदी स्टेशन ता देखा जाउची बट नॉट एक्सेसिबल ट्रैवर्सिंग होची यूजिंग द कंपास सर्विंग जेमिति दैट इज आल्सो योर ट्रैवर्सिंग ताले व्हिच मेथड रे को मेथड रे प्लेन टेबल सर्वे ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल दरकार हमरो नाही जोठी हमरो सब स्टेशन देखा जाउचा आ एक्सेसिबल अछि सेठी हमरो ओरिएंटेशन आ करिया किछ दरकार नै दैट इज योर रेडिएशन मेथड ऑप्शन है 7 नंबर if space between contours is large data contours भितर the space बहुत अधिक हला देन इट इंडिकेट्स ए जेंटल स्लोप स्टीप स्लोप केतले कहबा जदी तांकर स्पेसिंग ता कम हला जदी स्पेसिंग तांकर भितर कम हला ताको हम कहबा स्टीप स्लोप हला जदी स्पेसिंग कोन होचे बहुत अधिका होचे स्पेसिंग बहुत अधिका होचे देन ताको हम कहबा जेंटल स्लोप स्पेसिंग जदी कम हे थांदा लार्ज जगह जदी स्मॉल थांदा देन एटा शो करथांदा स्टीप स्लोप को ऑप्शन बी कहूचे कंटूर लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट इंडिकेट ए केव कंटूर लाइन जदी गोटे पॉइंट रे मीट करचंती देन ताको हम कहबा वर्टिकल क्लिप contour lines never intersect with each other but in such case in some case they intersects माने से माने देखा जानती इंटरसेक्ट कला बडी ताको हम कहबा ओवरहैंगिंग क्लिप आ गोटे पॉइंट रो बाहला होय देखा जानती ताको हम कहबा वर्टिकल क्लिप ताले बोथ द स्टेटमेंट ट्रू केव माने वर्टिकल क्लिप an angle measuring instrument reading up to 1/6 of a degree on the main scale is equipped with a vernier having 19 main scale division divided into 20 parts 20 part रे डिवाइड हे छै त लिस्ट काउंट हम जानछंती दैट इज योर s upon n डायरेक्ट वर्नियर रेट्रोग्रेड वर्नियर हो किबा एक्सटेंडेड वर्नियर हो डायरेक्ट वर्नियर माने 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज लेस देन 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल रेट्रोग्रेड हो छै 1 डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल समस्त लिस्ट काउंट के s upon n s हो छै 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल n हो छै नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आगे 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल फाइंड आउट करबा 1 division of the main scale केते कहै छै 1/6 of a degree on the main scale 1/6 of a degree गोटे डिग्री बाय 6 गोटे डिग्री जे केते 60 मिनिट बाय 6 10 मिनिट
हैला सेकंड रे ऑप्शन देछि सेकंड रे तो 10 मिनिट को सेकंड रे कन्वर्ट करियो तले s इज इक्वल टू केते 600 सेकंड s पाई गले 600 सेकंड देन n केते देछि n होछि नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल with a vernier having 19 main scale division divided into 20 parts 19 main scale division divided into 20 parts तो हमें पाई जिबा नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल केते आसीबो କରିଛ क्वेश्चन गुडा ना एग्जाम छाड़ी चाहिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कार हाँ एन केते कोन एन केते दे दी 19/20 19 main scale division is divided into 20 parts with a vernier having माने vernier और division कर दे 19 division is equal to your 20 division list count is equal to s by n हला 1 डिग्री जे 60 मिनिट तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कोन करबा हम लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कोन हो जो v minus s लिस्ट काउंट होची v minus s in case of the retrograde in case of the direct vernier लिस्ट काउंट हो जो s minus v s minus v तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू s minus v s minus v माने कोन वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल हला पुट करो लिस्ट काउंट केते अछि 19 डिवीजन तार वर्नियर द s minus v अप्लाई करो 20 डिवीजन तार मेन स्केल रो 20 डिवीजन तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कोन हो जो 20 बाय 120 माइनस 19 बाय 120 जदि डिग्री कन्वर्ट करियो 1/6 देछि लिस्ट काउंट एठी केते देछि देखो 1/6 ऑफ द 1/6 डिग्री ताको हम जो कन्वर्ट करे 600 सेकंड रे कन्वर्ट करे ताको मिनिट रखियो तापर सेकंड रे कन्वर्ट कर दो कारण आंसर हम देछि सेकंड देछि ताले लिस्ट काउंट एठी केते बाहर जो हमर वर्नियर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू s अपॉन n s देला हमर 600 बाय ये जो केते 230 सेकंड इज योर आंसर 9 the ends of a four circular curve are to be joined with a straight using transition curve one transition curve length is 150 meter the radius of curvature of the curve will be kete radius of the curvature degree दे देछि ओके हम कोन अप्लाई करियो जदि क्वेश्चन ले किछि मेंशन करिनि देन सबले बाय डिफॉल्ट 30 मीटर चेन कंसीडर करियो माने डिग्री इज इक्वल टू 30 मीटर हेले 720 बाय r डिग्री देछि 4 4 इज इक्वल टू 720 बाय r is your question mark r is your 720 by 4 430 meter option a next a flagpole appears in two successive photographs taken at an altitude of 2000 meter altitude दे देला 2000 meter माने flying height दे देला 2000 meter above datum the focal length of the camera f value दे देला 120 mm फोटोग्रामेट ऊपर एथर गोटे क्वेश्चन पड़थिला स्केल ऊपर स्केल इज इक्वल टू h by h minus h ऊपर क्वेश्चन पड़थिला एथर the focal length of the camera is 120 mm and the length of air base is 200 mm length of the air base is 200 mm the parallax for the top of the pole parallax is and for the bottom find the difference in elevation between the top and bottom of the pole h दे देछि width दे देछि डायरेक्ट खाली फार्मूला अप्लाई करियो ये क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत कम जेतु फोटोग्रामेट्री पढ़ी स्केल ऊपर तो पैरालैक्स गोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता पैरालैक्स एट टॉप फॉर्मूला कोन हो जिवो width into focal length by flying height minus top height हैला the parallax of for the top of the pole is 55.5
2 mm ताले this equal to 55.2 एठु तुमको h top केते बाहर करियो h top केते बाहरिबो d जगह रे पुट कर देबो केते 200 फोकल लेंथ जगह रे पुट कर देबो 120 mm h रो वैल्यू देछि 2000 मीटर खाली यूनिट को इक्वल करबो आ सब डाटा तुमको दे देछि सेमिति पैरालेक्स एट बॉटम बाहर करियो width width दे देछि 200 मीटर into focal length देछि 120 mm d into f by elevation बा टाइम हाइट दे देछि 2000 मीटर minus h of bottom एठी भी सेम h bottom बाहर करियो कारण पैरालेक्स बॉटम रो केते देछि 48.27 टॉप रो केते देछि 55.25 से पड़ी फार्मूला खाली पुट करिवो पुट द फार्मूला गेट द आंसर पैरालेक्स ऊपर अछि चांसेस कम आसीबर स्केल ऊपर आसीबर 11 an ideal flow of a liquid obeys ideal flow कौन फॉलो करे ideal flow कौन फॉलो करिवो कंटिन्यूटी इक्वेशन rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2 by a1 v1 is equal to a2 v2 continuity equation option A pressure inside water droplet हे जो के 4 sigma by d जेट गोटे सो बेबुल गोटे वाटर ड्रॉपलेट गोटे तीनटा को मन रखियो 4 sigma by d option B 4 sigma by d 13 a piece of wood having weight 5 kg weight होची piece जो काठर weight होची केते 5 kg floats in water 60% of its volume माने 0.4 v अछि ऊपर 0.6 v अछि तळे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड केते बा काठर स्पेसिफिक ग्रेविटी केते पचाछि ताले फास्ट हमें कोन करबा जेतिक हाइट बॉडी को अछि गामा इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम ताले वॉल्यूम इज इक्वल टू काट दो ऊपर एति की वॉल्यूम तळे एति की वॉल्यूम आगे कोन करो वॉल्यूम को इक्वेट कर दो टोटल बॉडी रो वॉल्यूम सपोज काठर हाइट हला h इनटू टोटल डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू तळे केते परसेंट बॉडी के अछि 0.6 टाइम ऑफ h बॉडी के अछि इनटू जो भी फ्लूइड बॉडी को अछि तार डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी पचाछि क्वेश्चन ले स्पेसिफिक ग्रेविटी पचाछि डेंसिटी ऑफ द बॉडी that will be your 0.6 into fluid रो specific gravity जो भी fluid अछि क्वेश्चन ले देइछि कोन वाटर देइछि ताले 1 हे जिवो 0.6 हे जिवो आंसर तापरे ए क्वेश्चन पटला जोटा तमरो 1008 कला पोस्ट ला सेथिरे ए क्वेश्चन पचटला बर्नौलीज इक्वेशन लो ईच टर्म कोन रिप्रेजेंट करे एटा जोटा पो टाइप रो बर्नौलीज इक्वेशन पिजोमेट्रिक हेड वेलोसिटी हेड एटम हेड प्रेशर हेड और एटम हेड को मिसे के हमें कहबा पिजोमेट्रिक हेड the specific weight the piezometric head h is equal to p by the rho g plus z एको हमें कहबा पिजोमेट्रिक हेड v square by 2g को कहबा वेलोसिटी हेड बा काइनेटिक हेड ऑप्शन ए maximum efficiency of transmission through pipe maximum efficiency होचे 67% कारण हेड लॉस हो जाए h by 3 67% डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा कारण हेड लॉस हो जाए टोटल हेड by 3 रो हेड लॉस हो जाए 16 the shear stress distribution in viscous fluid through a circular pipe case रे shear stress distribution एटा सर्कुलर पाइप सेंटर आसीबो 0 सरफेस रे आसीबो मैक्सिमम मिनिमम एट सेंटर इन विस्कस फ्लूइड ऑप्शन सी 17 बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू बर्नौलीज इक्वेशन में देखले जो p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to constant p होची कोन स्टैटिक प्रेशर रो होची डेंसिटी v होची वेलोसिटी z होची एलिवेशन हेड बा एटम हेड का पे एप्लीकेबल
हीटर ट्यूब होची वेलोसिटी काढा पे, वेंचुरोमीटर होची डिस्चार्ज काढा पे, ऑरिफिस मीटर होची डिस्चार्ज काढा पे, जोठी भी सब फ्लूइड फ्लो करूची सबुठी एप्लीकेबल माने ऑल ऑफ द अबव। 18 which is not a method of controlled flooding in irrigation method एमानक भितरु कोटा गोटे not a method। रिंग बेसिन, चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप ये सब को हमें कौन करते पानी कंट्रोल करते किंतु कंटूर्स माने कौन कंटूर्स माने पानी ऑटोमेटिक फ्लो करियो विथ द फ्लो ऑफ ग्रेविटी विथ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तर 100 रो कंटूर अछि 103 रो कंटूर अछि तो 103 रु 100 को ऑटोमेटिक पानी आसीबो सेथरा हमर कोनोसे कंट्रोल न थाए से कहछि नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रोल बाकी सबुतरा हमर कंट्रोल होतंती रिंग बेसिन आंबो आंबो बगीचा दैट इज अ रिंग बेसिन कॉल 19 if the duty of a crop ଦେଇଛି बेस पीरियड ଦେଇଛି फॉर्मूला यूज कर दो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b by d पर b होची बेस पीरियड रहइबो डेज रे d होची कोन ड्यूटी यूनिट आसीबो हेक्टर पर क्यूमेट वा एरिया बाय डिस्चार्ज डेल्टा रहइबो मीटर रे हला खाली पुट कर दो 8.64 b by डेल्टा डेल्टा आसीबो के 120 ground water basin consists of 1 kilometer square area दे देला the maximum groundwater population was has been observed to be 1 meter what is the available groundwater storage if the specific yield of the basin माने SY term टा दे देछि specific yield होच केते 10% 10% माने केते 0.1 तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल केते पचाछ अवेलेबल ग्राउंड वाटर केन बा करो एरिया तुमको दे देला 1 किलोमीटर स्क्वायर ग्राउंड वाटर स्टोरेज खाली पचारछि हाइड्रोलॉजी रो क्वेश्चन तो एठी कोन करबो यूनिट देखो कोन देछि मीटर क्यू देछि तम पाखरे कोन कोन डाटा अछि गोटे होछि एरिया किलोमीटर स्क्वायर आगे को मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करो 10 टू द पावर 3 किलोमीटर होछि केते 10 टू द पावर 3 रो स्क्वायर एति के जो मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर पाइलो हमको दरकार मीटर क्यू यूनिट दरकार से खाली कोन अप्लाई कर दवा मैक्सिमम ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन जो भी आसे ताको मल्टीप्लाई कर दियो माने 10 टू द पावर 3 रो स्क्वायर इनटू आसिला 1 सब कुछ हम कोन रखछन मीटर रखछन इनटू रहइबो तमरो 10% 10 बाय 100 10 टू द पावर 5 मीटर के ऑप्शन बी मार्निंग्स रफनेस कोएफिशिएंट मार्निंग्स रफनेस कोएफिशिएंट माने n रो 50 डायमेंशन गोटे होचे चेजिस कांस्टेंट c hg by f रो रूट ओवर आउट होचे मार्निंग्स कांस्टेंट दैट इज योर n n कोट आसे जो v इज इक्वल टू 1 by n r टू द पावर 2 by 3 s टू द पावर हाफ तो एठी n होची मार्निंग्स रफनेस कोएफिशिएंट मार्निंग्स रफनेस कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू केते r is equal to बस c आउ r विद रिलेशन इन टर्म्स ऑफ n c is equal to hg by f रो रूट ओवर चेजिस कांस्टेंट ताले यूनिट कोन हे जो यार n रो कोन यूनिट हे जो l to the power minus 1 by 3 into t ऑप्शन c next fifth theory by using Blick's theory for the design of floor if residual head at any section head दे दीजिए 0.42 मीटर and specific gravity of the material दे दीजिए g that is your 2.4 ताले thickness पचाची h by g minus 1 thickness h by g minus 1 head दे दीजिए क्वेश्चन है 0.42 specific gravity दे दीजिए 2.4 minus 1 0.3 मीटर 0.3 ऑप्शन में हाँ 0.3 मीटर ऑप्शन डी
Which method gives accurate estimate of average rainfall in hilly area catchment? Hilly area ले किए accurate method दिए isohytal method. Isohyt होची कौन line joining the points of equal rainfall of magnitude. Isohytal method रे हमें कौन करते P1 plus P2 by 2 into तार corresponding area. सेମିତି P2 plus P3 by 2 into तार corresponding area divided by total area. ହେଲା ତ ଏଇ method ହଉଛି ସବୁଠୁ accurate method. Most give accurate estimate, that is your isohytal method. Isohytal method. Orographic precipitation. Orographic precipitation कहाँ पाई? Mountain barrier पाई orographic precipitation. Presence of mountain variation. 25. Number of the rain gauge पचाची CB by E रो whole square. Coefficient of variance by error रो whole square. CB के देजे coefficient of the variation of the rainfall value दिया 4 rain gauge देचे station is 30%. CB दे देचे 30 divided by error के देचे 10% error दे देचे तो 30 by 10 रो whole square, that is your 9. 9 होची कौन number of the rain gauge. चार्टा रेन गज ऑलरेडी अच्छी ताला दरकार गेटा क्वेश्चन पचारछि एडिशनल पचारछि ए जिंसटा एग्जाम रे मिस हे जाए एकोटे के लक्ष्य रखिबो. चार्टा रेन गज देछि टोटल हमको 9टा दरकार एडिशनल केते दरकार पचारछि 9 - 4 5 इज द आंसर. A catchment area consists of 25 hectares area दे देला each of watertight groups in permeability factor I दे देछि gradients दे देछि. Forest land and areas with housing units, what will be the runoff coefficient of the area? समस्त को मिसे के एवरेज कर दो. जनकर देछि 0.9 आउ जनकर 0.1 आउ जनकर 0.05 हाउसिंग यूनिट से बड़ा 0.8 1 2 3 4 बाय 4. ऑप्शन ए equiclude. An equiclude is equictad equic for या भी तो क्वेश्चन ऐसे equiclude होची कौन गोटे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जोटा कि कौन था इम्परमेबल था तो फ्लो ऑफ द वाटर. A solid impermeable layer underlying or overlying an equiclude. Equiclude. 28. Which of the following is not a type of fire extinguisher? एमानक भितर किए गोटे फायर एंड एक्सटिंग्विशर नुहे, नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अछि जेमिति कि हमर क्लास ए फायर पाइन ହେଲା बहुत सारा ना गुडा अछि ता भितर मन रख नाइट्रोजन एक्सटिंग्विशर इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. an indicator an indicator organism recommended for bacteriological quality of the water काहा इंडिकेटर हिसाब नियंती ई कोली इश्चेरिचिया कोली. ई कोली हो छोटे ऑर्गेनिज्म जोटा कि हमरो मोस्ट प्रोबेबल नंबर एमपीएन टेस्ट करा जाय, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल नंबर. 30. minimum dissolved oxygen prescribed for a river system for the survival of the fish. For the survival of the fish minimum केते रखा जाय 4 ppm parts per million or milligram per liter. dissolved oxygen देछि BOD पचाछि ए क्वेश्चन हम आगुरु करछंती. BOD is equal to dissolved oxygen initial minus dissolved oxygen final into dilution factor. तो dissolved oxygen initial देछि क्वेश्चन ले 8 final देछि केते 2. 8 minus 2 into dilution factor केते देछि 300 ml. 2 ml is made up to 300 ml. 300 by 2. 32.
The waste water coming from kitchen and bathrooms is popularly known as ताको हमें कौन सी sewage discharge. Dissolved oxygen in stream. कॉलेज ना Dissolved oxygen कौन कहले sewage. ସେଟା ସ୍ଲଜ ଅଛି ସେଟା sewage ହେବ sewage. Sludge ପାଖାପାଖି आंसर ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି sewage. କିଚେନ ଆଉ ବାଥରୁମ ରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସୁଲେଜ ଲିକ୍ୱିଡ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାହାରେ ବାଥରୁମ ଆଉ କିଚେନ. dissolved oxygen in stream ରେ dissolved oxygen କଣ ଥାଏ stream ରେ dissolved oxygen କେତେବେଳେ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ dissolved oxygen ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ରେ ଥିବେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପୁରା ପିକ୍ ରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ପୁରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଗଛ ତାମାନେ maximum at noon option A. ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ ଗଛ କଣ କରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାଏ. स्ट्रीम ଦେଇଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଇଛି ହଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଇଛି. डिजल ऑक्सीजन कोउठ आसे जो आल्जी माने थांती सेमान तो प्रोड्यूस करिवो ना डिजल ऑक्सीजन स्ट्रीम रे के थाए फाइटोप्लैंक्टन थांती स्ट्रीम रे. फाइटोप्लैंक्टन कोन जीरो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन जेमा जो कोन पानी रे थिबा गछ पानी रे थिबा आल्जी टाइप रो गछ एमाने कोन करंती फोटोसिंथेसिस करंती पानी रे केमिति ऑक्सीजन आसीयो एमाने कोन करंती फोटोसिंथेसिस करंती. फोटोसिंथेसिस जेतबे नून टाइम आसीबो जेतबे सूर्यंग कोन सनलाइट को यूज करिवे ताको फोटोसिंथेसिस करिवे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिवे त माने डिजॉल्व ऑक्सीजन जेतबे कोन बढ़िबो सेते पय मैक्सिमम एट नून. फाइटोप्लैंक्टन जीरो प्लैंक्टन एमान सब होचंती फोटोसिंथेसिस करंती पानी भितरे. 34 what is the hydraulic retention time hydraulic retention time पचाची hydraulic retention time कौन हो time is equal to कौन करिवो देखो discharge is equal to meter cube per second ताले हमको time पचाची माने सेकंड पचाची तो time is equal to कौन हो जिवो वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज. क्वेश्चन देखो वॉल्यूम केते देछि 10000 मीटर क्यूब डिस्चार्ज केते देछि 50000 मीटर क्यूब पर डे ताले 10000 बाय 50000 ହେଲା ଏତିକି ଯାହା ବି ବାହାରିବ କୋଉଥିରେ ବାହାରିବ ୟୁନିଟ ଡେଜ୍ ରେ ବାହାରିବ ଡେଜ୍ ଯଦି ବାହାରିଲା 0.2 ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆୱାର୍ସ ରେ ପଚାରୁଛି 0.2 इनटू केते 24 48 बाय 10 हेले 4.8 ऑप्शन डी. The basic cause of crown corrosion is the formation of basic nature of crown corrosion law that is your hydrogen sulfide corrosion करता है hydrogen sulfide gas. acceptable limit noise level urban area केते पचाची residential and urban area डे टाइम देखिबो और नाइट टाइम देखिबो सबुठ प्रथमे कि आसीबो टेबल जो कहितली 75 70 तापरे 65 55 देन 55 45 देन 50 40 सबुठ अधिक होची एटा होची डे टाइम एटा होची नाइट टाइम. इंडस्ट्रियल जोन तापरे कमर्शियल जोन तापरे रेसिडेंशियल जोन तापरे साइलेंट जोन ହେଲା. तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर रेसिडेंशियल पचारछि रेसिडेंशियल माने 55 को नेकी 45 55 रु 45 40 रु 50 45 रु 55. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड्स टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन in the rural areas with a population of that was GK type of question PMGS रो जोठी 500% किंबा प्लेन एरिया अछि 500% और द हिली एरिया अछि
250%, प्लेन पाई 500%, हिली एरिया पाई 250%. Transverse inclination to the pavement surface is known as transverse inclination to the pavement surface को हमें कौन कहता है? Super elevation. Super elevation is the elevation of the outer edge with respect to inner edge or with respect to center. कौन कहता है? Super elevation. If an upgrade of 1.5 percentage is plus n1 1.5 percentage followed by a downgrade minus n2 minus 0.5 percentage, ताले फास्ट में कौन करिवा n बाहर करिवा n is equal to n1 minus n2 रो मोड. n1 केते 1.5 percentage, n2 केते minus of minus 0.5 हे जीवो plus 0.5, that is your 2 percentage. then 0.2 percentage होची 40 मीटर चेन पाई, ताले 2 percentage टा केते हबो क्वेश्चन ले पचार. 0.2% जदि 20 मीटर होची ताले 2% हेले कोन करबा into 10 मल्टीप्लाई करबा 200 मीटर इज द आंसर. चालीस कोची द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होची दुटा जिंस पय आस्ते गोटे होची लैग डिस्टेंस आउट होची ब्रेकिंग डिस्टेंस. लैग डिस्टेंस होची 0.2778 p into pr प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होची v स्क्वायर बाय 254 f प्लस और माइनस s. piv थ्योरी ऊपर बेस. तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ताले कहा पर डिपेंड करिवो? टोटल रिएक्शन टाइम ऊपर डिपेंड करिवो 2.5 सेकंड यदि किछ न देइथिबो अकॉर्डिंग टू IRC. स्पीड ऊपर डिपेंड करिवो, दैट इज द वेलोसिटी. एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक ऊपर भी डिपेंड करिवो, माने ऑल ऑफ द अबव. 41 in rotary intersection the webbing length हमें कहा कहला rotary intersection ले अरे एटा ला rotary intersection central island हेले ये जो पर्सन टा कहला webbing section. ओके webbing length ये पर्सन का कौन कहला webbing length. हेलो webbing rotary intersection the webbing length is the length between the ends of the channel in island in front of two consecutive entry and exit. एठी एंट्री करिवो एठी बाहरिवो तो कोन कहबा webbing length. ऑप्शन ए. 42 the free mean speed देछि. free mean speed माने vf देछि. ग्रीन शील्ड मॉडल अप्लाई कर दबो. ग्रीन शील्ड मॉडल बा फ्री मीन वेलोसिटी दे देछि 80, स्पेसिंग दे देछि 8, जाम डेंसिटी कोन हिजो 1000 बाय s 1000 बाय l 1000 बाय 8 is equal to 12.5 जाम डेंसिटी. कोन कोचनी किसी डाउट? मैक्सिमम फ्लो बा मैक्सिमम ट्रैफिक that is your 1/4 into vf into kj. 1/4 into free mean speed कर देछि 80, kj बाहरला हमरो 125. 2500 is your answer. ना advantages of asphaltic concrete ता bituminous concrete रो advantage होची कोन कोन? ड्यूरेबिलिटी रहिबो. asphalt concrete अछि माने ड्यूरेबिलिटी रहिबो, impervious रहिबो, लोड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी भलो रहिबो हला. जल्दी माने ट्रैफिक जदी आसला से लोड नहीं परिबो, स्पीड रेजिस्टेंस भलो प्रोवाइड करियो. ऑल ऑफ द अबव.
The general requirement in constructing a reinforced concrete road to a place of single layer of reinforcement. General requirement General requirement in constructing a reinforced concrete road is to place a single layer of reinforcement. Single layer of reinforcement हमें कोठे place करूँ. कोठे place करूँ single layer of reinforcement near the bottom of the slab na near the top of the slab. कोठ provide करूँ. Middle ले provide करूँ. जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट आसला कि इलास्टिक जॉइंट आसला ता पई मिडिल ले प्रोवाइड करिया. The gauge of railway track is defined as gauge माने inner to inner distance. The BG track हला 1.676 मीटर, मीटर gauge हले 1 मीटर, narrow gauge हले 0.762 मीटर. Sand may be used as ballast. को केस रे में sand को ballast हिसाब रे यूज कर परिया. Sand may be used as ballast for slipper pan, wooden slipper pan, wooden slipper pan, cast iron भी हो, cast iron तालु suitable है. Wooden to better होगा cast iron. CST9. Sand may be used as ballast for CST9. CST9 very good. CST9 होगा अधिका suitable है. Cast iron simple. 47. The minimum depth of the balance. Minimum depth is equal to S minus W by 2. S होची spacing, W होची width of the slipper. T is equal to S होची slipper spacing minus width of the slipper by 2. तो स्टैंडर्ड वैल्यू केते जदि हमर बीजी ट्रैक अछि 1.676 वाला गॉज लेंथ वाला ट्रैक अछि 4 ब्रॉड गेज 20 रु नै कि 25 सेंटीमीटर. बीजे ट्रैक पचारछि 20 रु नै कि 25 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी. मीटर गज पई 15 रु 20, नैरो गज पई 15 सेंटीमीटर. 48. The ruling gradient on BG section of Indian Railways in planes 1 in 50 on a track with 4-degree curve, the allowable ruling gradient will be. Curve दे दीची, ruling gradient केते पचारछि. आगे फास्ट कोन करबा grade compensation apply करबा. Grade compensation is equal to track देची ruling gradient on a BG track देची माने 0.0004 into side degree curve दे दीची 0.0016. that is your grade compensation. ruling gradient दे दीची 1 by 150 ताले 0.0016 को आगे कन्वर्ट करबा 1 in 625 में. तो ये हो जे ग्रेड कॉम्पेंसेशन. ताले केते माइनस कर दो अलाउबल केते ग्रेडिएंट हम प्रोवाइड करबा माइनस कर दो 1 by 150 अछि माइनस कर दे 1 by 625. आंसर will be 1 by 197. एटा मन रखियो ग्रेड कॉम्पेंसेशन बीजी पाई 4 हेले मीटर गज पाई बीजी पाई ब्रॉड गज मीटर गज नैरो गज 4 3 2. The gradient which determines the maximum load that the engine can haul on a section is called what? Maximum load जोटा कोडे engine कौन कोई परिवो टाणी परिवो ताको मैं कौन कहता. The gradient in which determines the maximum load that the engine can haul on a section. ताको मैं को gradient कहूँ. रूलिंग गार्डियन कौन गोटे सर्वेयर बा डिजाइनर जोटा से डिजाइन करिया को चाहे रूलिंग गार्डियन जोटा होची नॉर्मली 1 in 150 रु नै कि 1 in 200 रखाइता. पुशर गार्डियन होची दिदिरा इंजन दरकार. मोमेंटम गार्डियन होची माने रोलिंग गार्डियन उठिबो. हां उठिबो पुनी खसिबो डाउन अप एंड डाउन. आ एक्सेप्शनल गार्डियन होची बहुत ही
स्टीप ग्रेडियंट गोटे स्टीपर ग्रेडियंट जोटी हमर पॉसिबल नुहे माने कोन एक्सेप्शन करियो सेठी प्रोवाइड करियो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ताले एठी कोन होजो आंसर द ग्रेडियंट व्हिच डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड डिसाइड करे गोटे इंजन केते टाणी परियो कोन करियो Rolling gradient. रूलिंग ग्रेडियंट bull headed rails are generally पुष्कर गार्डियन provided कौन pusher gradient होची गोटे ग्रेडियंट जोटा कि गोटे एडिशनल लोकोमोटिव दरकार ट्रेन को टाणिया पई ताको हम कहबा पुशर ग्रेडियंट गोटे हेल्पर ग्रेडियंट माने नॉर्मली पहाड़ रास्ता मानन करे पहाड़ रास्ता मानन करे गोटे इंजन जोटा टाणी परिबोनी दीदीटा इंजन जो ग्रेडियंट को दरकार ताको हम कहबा पुशर ग्रेडियंट bull headed rails are generally provided on what दिया जाए Points. points and and crossing. in case of building stones the test that is used to find the presence of soluble organic matter Next test. को टेस्ट होबो एटा स्मिथ टेस्ट in case of building stone smith test soluble organic 52 the defect observed at spongy solid mass spongy ଆଉ solid mass होची तार कीवर्ड ताको हम कोन कहबा ब्लोटिंग होची स्पंजी आउ solid mass चॉप होची वर्षा पानी पड़िबो हठात गोटे गरम सरफेस ऊपर ब्लैक कर होची सेंट्रल पोर्शन टा बलसे माने पड़ी नथिबो बाहरटा पड़ी जइतो 53 a freshly cut surface of timber should exhibit गोटे गछ को हम पूरा फ्रेशली काटी के आनी चंती आजि गले गोटे गछ को काटी के आनिले कोन रहबो ता सरफेस शाइनिंग सरफेस रहबो आजि यदि काटी के आनी चंती देन शाइनिंग सरफेस रहबो ताले जोठी डॉल हमर डॉल ऑप्शन अंदर काटी दि डॉल शाइनिंग सरफेस रहबो आउ हार्डनेस रहबो तर आजि काटी के आनी चंती तापर जाई तो सीजनिंग कॉलेज जाएंगे सॉल्व करो the solution 54 the solution of salts from the soil absorbed by the trees which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide तो मैं Sap. कौन कौन साफ बिस्मर प्रोसेस एटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग रो प्रोसेस होचे बिस्मर प्रोसेस what is the percentage content of asphalt in cordbag bitumen ले कितने परसेंटेज था 85% 80%. 85% था cordbag bitumen ना asphalt the classification of soil of highway resource board is based on Both. कौन Particle size. both particle size आसीबो and plasticity आसीबो Plasticity. हां हाईवे रिसर्च बोर्ड रे हम ग्रुप इंडेक्स टर्म रे डिफाइन करंती ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0 रु नै कि 20 भीतर लाई करथाय ग्रुप इंडेक्स वैल्यू जते अधिक आसला सते खराब 58 the combined name for the two tests solidness index and tackiness index elongation index and tackiness index तो कौन कौन दी सेफ टेस्ट tackiness index out of elongation hochi 1.8 times of the mean dimension tackiness hochi 0.6 times of the mean dimension 59 which of the following is not a mechanical property of building material एमान भितर कोटा गोटे mechanical property नुहे mechanical property रे के आसीबो strength hardness
इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ब्रिटलनेस फटीग abrasion resistance एमाने सब आसीबे मेकानिकल प्रॉपर्टी रे ताले किए आसीबो नाही मेकानिकल प्रॉपर्टी रे ड्यूरेबिलिटी 60 after casting an ordinary cement concrete on drying ओटा ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट को हमें कास्टिंग करले जेतो से ड्राई होबो से कोन करिवो श्रिंक करिवो कि नहीं ऑप्शन सी श्रिंक करिवो 61 the main object of compaction of concrete को हमें concrete को compaction करिवा कोन पय to eliminate air holes to achieve maximum density तमने all of the above 61 62 नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन माने कोन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन माने होचे सॉइल धसी जीवो हैला सॉइल धसी जीवो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन माने सराउंडिंग सॉइल बहुत ही लूज थिबो सॉइल धसी जीवो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल ऑप्शन बी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैबिलिटी नंबर दीटा वैल्यू थाए गोटे होची थियोरेटिकल वैल्यू दैट इज योर 0.5 और होची प्रैक्टिकल वैल्यू दैट इज योर 0.261 प्रैक्टिकल वैल्यू होची दैट इज योर स्टैबिलिटी नंबर 0.261 स्टैबिलिटी नंबर इज इक्वल टू c by gamma into hc 64 in shallow foundation design the correction factor for water table correction in case of water table permanently remaining at or below depth of the foundation is taken as केते नियंती water table correction factor यदि अप्लाई करिवो 0.5 all into bw by x upon df नहीं पारे बा bw b नहीं पारे एटी क्वेश्चन आगे कम बोलছে देखो एटा होती फाउंडेशन ले गोटे आसीबो ग्राउंड लेवल फाउंडेशन लेवल आ गोटे आसीबो स्ट्रेस लेवल जेति की विड्थ ऑफ द फाउंडेशन थिबो सेति की डेप्थ तळे आसीबो स्ट्रेस लेवल बाहर जदि पानी रहिला ताले कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नाही वाटर टेबल करेक्शन ला कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नाही करेक्शन बा रिडक्शन फैक्टर फॉर वाटर टेबल किंतु जदि भीतर रहिला एठी क्वेश्चन कोन देछि water table permanently remaining at or below a depth plus width eta hoche depth of the foundation that is your df plus width of the foundation eta hoche width of the foundation ta mane stress level pore jodi rahila then water table correction factor kon ajibo no change 1 छोटो क्वेश्चन को बुले बांकी बसछ In determining the bearing capacity of piles, empirical factor C is assumed as bearing capacity of the pile जेतला हम apply करंती engineering use record formula that is the ultimate bearing capacity is equal to weight of the hammer into height of the fall by set plus C ये जो C होचे कोन constant ये होचे drop hammer ପାଇଁ 2.5 cm for single acting steam hammer by double acting steam hammer ପାଇଁ 0.25 cm question is ask me about drop hammer 2.5 0.25 होची कहा पाए सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर नहले डबल एक्टिंग स्टीम हैमर Mohr circle for a direct shear test should be drawn Mohr circle for a direct shear test कोट हमें ड्रॉ करिए beginning of the test intermediate step at failure of test sigma 1 out sigma 3 major principal stress और minor principal stress जो भी failure हो coefficient of the earth pressure at rest पर चाहिए 1 minus sin phi k naught is equal to 1 by mu by 1 minus sin phi mu होचे Poisson's ratio इनते k a है गले 1 minus sin phi by 1 plus sin phi just का उल्टा टा plus sin phi बा 1 plus sin phi 1 minus 68 कोची कितने आसीबो तमरो मैक्सिमम सिग्मा इज इक्वल टू कोन
dq upon 2 pi z square into 1 by 1 plus r by z whole square to the power 5 by 2 देखो जब मैं अप्लाई करबा r by z रो वैल्यू को इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल जस्ट बिलो द लोड पॉइंट माने r इक्वल टू 0 जेतोना r इक्वल टू 0 r by z भी हेजबो 0 सेते बडा सिग्मा हेजबो 3 by 2 pi into q by z square तो 3 by 2 pi टा केते आसीबो दैट इज 0.4775 q by z square 0.4775 देखो ना q by z square ऑप्शन डी 69 a 10 meter deep sandy stratum गोटे sandy stratum नहीं जाओ 10 मीटर डीप bulk density दे दीजिए तो गामा दे दीजिए 20 किलोन्यूटन पर मीटर इज हैविंग द वाटर टेबल एट 2 मीटर माने सपोज एटा होची वाटर टेबल केते होची 2 मीटर रे होची वाटर टेबल एटा हेलो तमरो ग्राउंड लेवल below the ground level using assuming the density of the water was 10 kilonewton per meter cube the effective stress at 10 meter below the ground level 10 meter below माने 80 effective stress केते 50 effective stress is equal to total stress minus pore water pressure आगे बाहर करबा total stress केते हेजबो ऊपर 2 मीटर रो कोन अछि bulk unit weight दे देछि 20 तो ऊपर 2 मीटर अछि bulk unit weight हैला bulk हमरो टोटल स्ट्रेस कहा पय आसी था दीटा जिंस पय आसी था गोटे होच हमरो सरचार्ज पय आसी था आउट होच सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल पय आसी था जो भी पॉइंट हमें बाहर करछन को पॉइंट बाहर करछन तळे बाहर करछन त टोटल केते हाइट रो सॉइल अछि 10 मीटर हाइट रो सॉइल अछि तो 10 into 20 दैट इज योर 200 जेतो गामा सैचुरेटेड देइनी तो हमको गामा जा देबी ताकू ही नहीं कैलकुलेशन करे पे पड़ियो सेमिते पोर वाटर प्रेशर केते हेजबो 8 मीटर हाइट रो पानी अछि 8 into unit weight of the water that is your 80 ताले इफेक्टिव स्ट्रेस हे जो केते 200 minus 80 120 इनिशियल एंड फाइनल void ratio of a clay sample देछि माने तमे पाइ गेलो चेंज इन void ratio पाइ गेलो if the initial thickness of the sample माने h पाइ गेलो then its final void ratio केते पचाछि delta h by h naught तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं delta h by h naught delta E by 1 plus E naught. Question ले delta H कितने दीजिए 12 point. If the initial thickness of the soil sample delta H माने H minus change of length. Initial थिला 12.4 minus कितने changes है हमको जाना नहीं by initial थिला 12.4 equal to change in void ratio हो चे 0.89 minus 0.45 by 1 plus 0.89 एको सॉल्व करी कि h1 खाली केते बार करिए केते आसे केते आसे सर 9.5. 9.5 ऑप्शन सी ए फॉर्मूला मन रखियो इंपोर्टेंट व्हाट विल बी द सीपेज वेलोसिटी पचारछि हैविंग velocity of soil having 7 discharge velocity दे देछि एते की एंड void ratio देछि void ratio माने e रो वैल्यू देछि e रो वैल्यू देछि सीपेज वेलोसिटी पचारछि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कोन एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी हैला void ratio देछि 0.5 0.5 रो आगे पोरोसिटी बाहर करियो e by 1 plus e 0.5 by 1.5 0.33 आसीबो d रो एवरेज वेलोसिटी देछि 5 into 10 मीटर पर सेकंड 5 into 10 मीटर पर सेकंड हेले by 1 by 3 ले 5 3 15 ऑप्शन ए ये फॉर्मूला मन रखियो डार्सी हमर जो डार्सी जो वैलिड लॉ जो वैलिड डार्सी लॉ इज वैलिड कहा पई लामिनार फ्लो पई
homogeneous soil ପାଇଁ ଆଉ saturated flow ପାଇଁ saturated soil condition ପାଇଁ ତ ସେଠି ଆମେ जो velocity पाइबा that is your average velocity but actually fluid flow through the interconnecting voids तो सेठी ପାଇଁ ଆମେ कोन कोन टोटल एरिया बदल जदी interconnecting voids को देखिबा जोटा कि कैलकुलेशन करिया पॉसिबल नै सेठी हम पाइबा एक्चुअल वेलोसिटी दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी कैलकुलेट कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिक्विड लिमिट देइची प्लास्टिक लिमिट देइची वाटर कंटेंट देइची कंसिस्टेंसी इंडेक्स तो डायरेक्ट फार्मूला पके देबो दैट इज योर लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट the ratio of change of dimension of the body to the original dimension is known as change in length by original length. 10. 10. 10 is unitless and dimensionless. If the depth of a rectangular section is reduced to half, माने ଗୋଟେ rectangular section लो depth जदी अधा हे गला ताले strain energy कोन होबो पचारछि strain energy आउ I होउछनी कोन inversely proportional I होउछि inertia bdq upon 12 bdq upon 12 ता माने dq अबच inversely proportional तो u2 by u1 is equal to गोटे होउछि कोन d आ गोटे केते d by 2 the whole cube that will be your 8 हिजबो आंसर ता रेक्टेंगुलर देछि I is equal to bdq by 12 u जदी I सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हला and I आउ dq होचन रिलेशन लो चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ता माने u2 by u1 is equal to d1 by d2 रो होल क्यूब 75 the Young's modulus of a material E the value दे देछि 150 Poisson's ratio देछि 0.25 modulus of the rigidity पचाछि फॉर्मूला मने अछि कि नै E G mu भीतर रिलेशन equal to G one plus mu. G in no 1 plus 1 plus mu by E is equal to 3k whole into 1 minus 2 mean. 1 minus 2 mu तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो एटा ए बडी क्वेश्चन सब एग्जाम पड़ी in a continuous bending moment diagram the point where it changes sign जो sign change करे ताको हम कोन कहबो point of contact texture तो ये ऑप्शन नहीं point of inflection का कहबो point of inflection point of contact texture point of inflection का कहबो Sir, all of the options. all of the above option in a continuous bending moment diagram the point where it changes sign bending moment जो sign change करछि The point of contraflexion, sir. Inflation भी हबो virtual hinge भी हबो point of virtual hinge हबो inflection हबो contraflexion हबो ताले कौन हिजबो ऑप्शन all of the above The point of inflection मतलब कोडे सर सही contraflexion sir. जदी point of inflection माने जो deflection कर्वटा जदी bending moment change करूछु तार sign ताले curvature भी change होछि कि नै curvature change होछु curvature changes को हमें कहबा point of inflection bending moment change होतो ताको हमें कहबा point of contraflexion और सेही ग्राफ को हमें कहबा point of virtual hinge all of the above एटा केते हो WL square by WL square by 20 जोटी अधिका लोड अछि जोटी अधिका लोड होजे सेटा हे जो WL square by 20 जोटी कम लोड होछि सेटा हे जो WL square by 30 30 The shear force diagram for a cantilever beam carrying uniformly load distributed cantilever beam carrying uniformly load
distributed load for unit length will be a 77 টা কোন হবে 77 WL square by 30 হবো অধিকাল A point রে WL square by 20 হবো B point রে question is asking about support A Support তাহলে support A রে কেতে হবো WL square by WL square by 20. WL square by 20 78 কোন হবো ইয়ার ডায়াগ্রাম কোন আসিও cantilever UDL Sir, ଅଛି rectangle. Right angle triangle. Rectangle. এটা ହେଇଯିବ shear force diagram W into L bending moment diagram ହେଇଯିବ parabola WL square by right angle triangle. If the average shear stress in a rectangular section, average shear stress दे देछि then maximum पहुंचाछि maximum by average केते rectangular 1.5. 1.5. 1.5 Right. पुट कर दो खाली 1.5 किंतु क्वेश्चन में कोन पचाछि सर्कुलर पचाछि तार आगे मैक्सिमम केते बाहर करियो 4 by average 3 होगा circular. shear stress होछि 5 then maximum shear stress for the circular पचाछि tau maximum by tau average is equal to 4 by 3 in case of circular তাহলে tau average রে খালি 4 by 3 multiply করি 5 into 4 by 3 6.6 सर्कुलर रे 4 by 3 रेक्टेंगुलर रे एटी क्वेश्चन टिके माने कोन चालाक करी पचाई सो दैट की कंफ्यूजन करे पे बट एंड रे पचाछु सर्कुलर रे देखले 50 6.6 plus. a steel plate of width दे देछि 120 end of thickness दे देछि 20 mm width देला thickness देला is bent into a circular arc of radius circular arc में bend करले जार radius हमको दे देछि केते 10 meter if the elastic modulus of the section e ର value दे देला maximum stress induced in the beam माने sigma ର value पचाछि sigma upon y is equal to m upon I is equal to e by r put कर दबा sigma is equal to कौन हो जिवो m into y upon I by equal to कौन हो जिवो e into y by r sigma is equal to कौन हो जिवो e into y by r नॉट m into y by e तो हम डाटा देछि e रो वैल्यू देछि रेडियस देछि त माने ए फॉर्मूलाटा पुट करियो तो सिग्मा इज इक्वल टू ई केते देछि 200 giga pascal 10 to the power 3 एम्पियर कन्वर्ट कर दो इनटू ई इनटू वाई वाई केते थिकनेस केते देछि 20 mm ताले वाई केते हे दिबो 20/2 ई इनटू वाई डिवाइड बाय कोन थला आर थला आर केते देछि 10 मीटर माने 10,000 mm सब हम mm रे रखुछंदी ये कटि गला sigma is your 200 MPa option A if an element is subjected to a pure shearing stress खाली shearing stress पड़ुछे the maximum principal stress माने sigma 1 और sigma 2 खाली shear stress पड़ुछे now x Euler's buckling load for a column whose both ends are fixed केते 0.5 L माने L by 2 to the pi square Euler's buckling load PCR ର फॉर्मूला कोन pi square EI by L effective square तो pi square EI by L effective जगह रे कोन पुट करबा L by 2 पुट करबा कारण 0.5 L तो 4 ताले ऊपर को पळेबो 4 pi square EI by L square 83 आगे रिएक्शन बाहर कर दबो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन 9टा हैला तापरे DSE बाहर कर दबो तो 9 minus 3 6 DSI केम बाहर करिवो 3C minus RR
3c minus r लूप केटा अछि गोटे दीटा 3 into 2 minus केतटा हिंज रे केतटा मेंबर कनेक्टेड 1 2 3 minus 2 summation of member minus 1 3 minus 1 2 तो 6 रु 2 गला केते 4 तो मिसे दियो 6 4 10 इज आंसर ordinary moment resisting frame should not be used in seismic zone हम केमिति डिवाइड करंती ordinary moment resisting frame हम zone 4 और zone 5 रे यूज कर परन सेटा होचे हाईली seismic zone 4 और zone 5 तो सेठी हम ordinary frame यूज करि परिबा नाही अरे zone ଏବେ 4 ତିନିଟା ଅଛି ନା एबे ତିନିଟା ଅଛି ନା 1 2 3 1 2 3 4 चारटा अछि बट एक्चुअली आगुर पांचटा थिला ता भितरु 4 5 को हमें ऑर्डिनरी मोमेंट यूज कर परिबा The stress carried by the king post of a king post roof truss is king post माने एटा होचे king post एटा होचे queen post king post कौन कैरी करियो माने ए जो मध्यटा कौन कैरी करियो सेंटरटा कंप्रेसिव 84 ର आंसर ଟା कोन हले सर 84 जोन 4 और जोन 5 होचे हाईली सेस्मिक जोन तो सेठी हमें ऑर्डिनरी मोमेंट स्ट्रक्चर तयारी कर परिबा नाही डाला कंप्रेसिव हला 85 हला ऑप्शन बी कंप्रेसिव 86 कौन 2j minus 3 m is equal to 2j minus 3 option D 87 the maximum bending moment due to single moving point load on a simply supported beam occurs at गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम अछि गोटे पॉइंट लोड मूव करूची मुलर वेस्लू प्रिंसिपल आईएलडी रो कांसेप्ट एटा हो सब गोटे पॉइंट लोड जोटा कि मूव करूची ताले जोटी पॉइंट लोड रहबो सेटी मैक्सिमम आसी Anywhere in the plane. a section under the load Anywhere. जोटी तमरो पॉइंट लोड रहबो तारी तळे ही मैक्सिमम आसीबो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तापरे स्टिफनेस पचरची फार एंड जदी फिक्स रहिला ताले कोन 4 ei by l फार एंड जदी हिंज रहिला 3 ei by l तोटा होची 4 ei by l 3 ei by l एटा भी सेबला हे जिवो 4 ei by l तो समस्त को मिसे दियो 4 4 8 3 11 11 ei upon l 11 ei upon l तोटा हे गला कोन मोमेंट हे गला क्वेश्चन ले कौन पचारची तो rotation moment is equal to 11 ei upon l moment is equal to k into theta ताल theta हे जो कोन m into l upon 11 ei m into l upon 11 ei option b m is equal to k into theta k होची stiffness theta होची rotation the creep strains are creep माने कौन permanent deformation long term deformation किछुडे डेड लोड बा किछुडे लोड जिमि पड़ी के रहला सेते जो permanent deformation आसीला अपन कहबा creep कोडा हबो आंसर cause due to A dead loads 90 m20 grade of 20 mm nominal mix m10 माने 136 m15 माने 124 m20 होची 1:1.5:3 m25 होची 112
1:1.5:3. Option D. Option D. M 20 1 to 4 होची M15. A column ର size ଦେଇଛି 450 into 600 has unsupported length of 3 meter. Length भी दे दीजिए. Is braced against sideway in both direction. IS 456 2000 the minimum eccentricity with respect to major and minor पचाची. Minimum eccentricity होची कौन? L by 500 plus D by 30 or 20 mm. L by 500 plus D by 30 or 20 mm. L केते देइछि 3 मीटर 3000 by 500 plus D ର value केते देइछि 600 600 by 30 केते आसु देखो 26 आछि ताले एसेंट्रिसिटी केते आसला 26 mm. एटा को एक्सिस अराउंड आसला मेजर एक्सिस सेते पे हम डी कंसीडर करले से बोले माइनर एक्सिस देखिबा एसेंट्रिसिटी ऑफ माइनर एक्सिस खाली डी जगह कम पड़िबो बी पड़िबो बी पड़ला माने 45 बाय 3 हे जियो 50 15 6 जियो केते 21 ताले 26 21 ऑप्शन बी फॉर्मूला मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट L by 500 plus D by 30 or 20 mm एमिति माइनर एक्सिस हेले L by 500 plus D जगह खाली B जियो B maximum allowed deflection in a simply supported RC beam under uniformly distributed load including long term elastic and shrinkage effect केते L by 250. L by 250 slab minimum enforcement slab रो minimum enforcement होची केते 0.12% और 0.15% 12 टा होची high yield strength deformed bar पई 15 टा होची mild steel पई और maximum केते 4%. minimum very good 15%. 15 नहीं 4% maximum होची 4% minimum होची 0.15% for HYHD bar 15% for mild steel bar 0.12% for HYHD bar और maximum होची 4% तो एठी देछि minimum enforcement for Fe250 माने mild steel माने 0.15% an axially loaded column 450 square column देछि effective length of the column देछि 5 meter what is the same question minimum eccentricity L by 500 B or D by 30 नले 20 mm L होच के 5000 by 500 10 हे गला एठी गला 450 by 30 15 हे गला तो गोटे आसबो कते 25 mm ऑप्शन ए सही फॉर्मूला L by 500 plus B or D by 30 or 20 mm according to IS 456 2000 in the limit state method for the design of beams the limiting values of depth of the neutral axis 250 ପାଇଁ କେତେ 0.48 ନା 0.53 0.53. 0.53 तापर 0.48 तापर 0.46 ऑप्शन बी which of the following statement is incorrect पचाज earliest start of an activity is the early event time of the node it leaves I ଆଉ j थोड़ा I ରୁ start होला j रे end होला I होउची गोटे starting event j होउची गोटे ending event ଆଉ I j को हमें कहबा that is your activity होला तो earliest start of an activity is the early event time of the node it leaves तो ठीक अछि बुडो ठीक अछि एटा
early start of an activity is the early event जो to start होला सेटा होची early event second कोच latest finish of an activity is the late event option 2 भी ठीक अछि option C कोच latest start of an activity is the latest finish minus its duration latest start is the latest finish minus of t of small ij option C भी ठीक अछि তাহলে এক ঠিক দুই ঠিক তিন ঠিক তিনটা को ठीक अछि ऑप्शन अच्छा इनकर्ड D पचार हବ D D. इनकर्ड माने नॉन ऑफ देव हो D कौन से भी इनकर्ड पड़े करेक्ट पचार ऑल ऑफ देव हो जाए तापने एटू फाइंड आउट करिवो जोडा सबुडु छोटो टाइम दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम आउट होची मोस्ट लाइकली टाइम तापर एक्सपेक्टेड रो टाइम रो फॉर्मूला रे पुट करिवो ऑप्टिमिस्टिक 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6 98 The fire safety requirements of the building is designed as for fire safety ये सब टेस्ट सीरीज जो कोड गुडा सब नुआ नुआ कोड पाल ताकर जे शॉर्ट नोट्स टिके लेखि रखि दउथियो IS 875 तो इंपोर्टेंट ता सहित आउ जति एक्स्ट्रा जिंस पाउछ 1343 पीस टेस्ट कंप्लीट तो सब टिके टिके शॉर्ट नोट्स लेखि के रखि दबो एग्जाम टाइम में खाली डेटा आखि रखि दिबो 16451960 नेक्स्ट मेसेन ऊपर यूज स्ट्रेट लाइन मेथड देछि स्ट्रेट लाइन मेथड माने d is equal to c minus s by n depreciation is equal to c minus s by n तो क्वेश्चन ले तो फास्ट देखो ओरिजिनल वैल्यू केते देछि आउ यूजफुल लाइफ केते देछि मेसिन लो कॉस्ट होछि 8500 पुट करो 8500 माइनस एबे स्क्रैप वैल्यू देछि 300 300 टा माइनस करो बाय n केते देछि मेसिन ऑफ दिस क्लास हैव ए वर्किंग आवर average life of 25,000 hours 25,000 hours what will be the depreciation charge at the end of the first year गोटे वर्ष पर depreciation केते then if the machine is operated for total 1500 hours ताले useful life केते हे गला total life होची 25,000 यूज करछन हम केते केते आवर 1500 ताले हम फॉर दी केते आसे 1500 हेले 15 के 15 16 पाखापाखि आसो ताले n हे गला तमरो 16 अरे दूसरा सुनो केते आसे आंसर 492. 492 स्ट्रेट लाइन हो जी c minus s by n 100 a machine list 1 list 2 select the correct excavation and moving का साहाय्य रे excavation dumper तो होचे हमर कोन ट्रांसपोर्टेशन excavation और moving का साहाय्य करबो Rappers. माने खोलिबा ता से तो मूव पावर करबा सेवर स्क्रैपर तापर प्योर खाली excavation का साहाय्य करियो पावर पावर shovel सेवर खाली excavation पावर shovel गोटे होचे तापर होचे गोटे होचे डेरिक आउट होचे खाली ट्रांसपोर्टेशन का साहाय्य करियो खाली ट्रांसपोर्टेशन प्योर ट्रांसपोर्टेशन डेरिक प्योर ट्रांसपोर्टेशन जनो डेरिक कोनते डंप ट्रक जो हमें नॉर्मली कोनते माने छोट बड़े यूज माने डंपर माने कोन पछरे गोटा हाइड्रोलिक जैक लागिथिबो एटा उठिकी सेठी आउ लेबर दरकार नै केवल डिपोट कला बेले लेबर दरकार ढाळिला बेले आउ मेन पावर दरकार नै से ऑटोमेटिक ढाळिबो ता कोन कोन डंपर तो सेटा हो डंप ट्रक प्योर ट्रांसपोर्टेशन रे आ बाकी जोटा बड़ी गेला दैट इज योर फर्स्ट डेरिक डेयरी चलो कंप्लीट मॉक टेस्ट 8 डिस्कशन कंप्लीट आउ दीटा रहला
काली अछि टेस्ट सीरीज आगे सर केते आसलेन टेस्ट सीरीज 100 क्रॉस कलानी कि नहीं ना हेनी कार एपन कार हेनी ट्राई कर चलो जेपन तो न होची इंप्रूवमेंट कर चलो एटलीस्ट जदी जहार टेस्ट सीरीज जेतिक मार आसिला मेन मॉक रे बा मेन टेस्ट रे प्लस 10 मार्क माने चलो देन निजो को देखो सिलेक्शन होची कि नहीं चलो थैंक यू रिवीजन क्लास अछि 7 टा रे सर्वे